Actually, ma'am says that our staff is getting late, but with request. सर ऊपर ही चलेंगे. हाँ, sure. नहीं, सर थोड़ा वो भी नहीं मैं थोड़ा टाइम ले. ये I want here. तो मैं आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ. एज ए आई हैव गॉट 20 years ऑफ हेड एग्जामिनर इन CBSE. तो व्हाट आई फेस्ड, सर बोर्ड इधर करना पड़ेगा. यू कैन स्विच ऑफ दिस प्रोजेक्टर इफ यू विश. Look, when we people evaluate the question paper, it's very important, very important. Most of you are aware of this. Most of you may be getting it first time, but it is very important. इसको ऑन कर दीजिएगा सर. सर आई नीड हेल्प टू रब इट अप. नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है सर माइक की. Am I audible? Okay. एक क्वेश्चन है. The man who requested is missing. Ask him to be here. एक क्वेश्चन है that a man is standing 5 meters before a plane mirror. A man is standing 5 meters before a plane mirror where his or her image will be formed. Simple. एक ऑब्जेक्ट है, वो प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है, रखी गई है, तो उसका इमेज कहां बनेगा? I know this. Scene number 1. I want it to be rub it up and थोड़ा इसको आगे कर दीजिए सर, आपको कष्ट दे रहा हूं मैं. ये क्वेश्चन आया 1 मार्क का. क्या लिखोगे आप? A man, an object is standing 5 meters before a plane mirror. Now I am a teacher. You are my all students, irrespective of the seniority, juniority. So where the image will be formed, the answer you have given 5 meters behind the mirror. This is a 1 mark. You get 1 out of सही जवाब. 10,000 जीत गए आप. Now this question is of 3 marks. What you will do? 10 centimeter from the object. हाँ जी. 10 centimeter from the object. 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. Okay, dear students. Now I am saying, dear students, what is the focal length of a plane mirror? Wonderful, wonderful, wonderful. So f is equal to r upon 2. The f is equal to infinity. Radius of curvature is infinity. So 1 upon infinity, 1 upon u plus 1 upon v. This is 0, u plus v upon uv. U plus v is equal to 0, u is equal to minus v. Is proved. U is the distance of the object, v is the distance of the image. This will fetch you 3 marks. CBSE क्या कहती है? Student must mention according to the mirror formula. Then mirror equation 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon v. लिखते ही नहीं बच्चे. बच्चे क्या करेंगे? सीधा ये मारा, उसके बाद ये लिख दिया. According to our teachers, मार्क्स नहीं दिए जाते. Despite 3 marks, उसको मिलेगा 1 mark. फिर वो बोलेगा कि मैंने तो सही किया था, ये गलत कैसे हो गया, मेरे पेपर से ही चेक नहीं हुआ. Now the same question, 5 marks. Same question, 5 marks. हमने क्या करना है? Proportional to the length of the marks distribution, हमने आंसर का लेंथ डेवलप करना है. Hope
इसके लिए करना क्या है? सिंपल इट इज, वी आर गोइंग टू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनआई एंड एआई. एआई में तो दिस दैट, एनआई में क्या है? वी आर इंटरैक्टिंग, दिस इज द डिफरेंस. ये प्लेन मिरर बनाएंगे हम, ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम, रे स्ट्रेट, रिफ्लेक्टेड बैक, स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट. देन अनदर रे स्टार्ट्स, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, angle of incidence, angle of reflection. This is an objective where the image, where reflected ray and incident ray appears to meet eye. Am I right? अब इसमें बच्चे क्या करते हैं? A ray starts from A, strikes at A, then reflected ray B, then I is the image. Need not to write so many things. क्या लिखेंगे? The course of rays are as shown in the ray diagram. खत्म. SBNB concept, सीधी बात, नो बकवास. और वो टीचर भी नहीं पढ़ता, बट लिखा होना बड़ा जरूरी है. जैसे कार्ड पे लिखा होता है, यू आर कोर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड द ग्रेशियस ओकेजन एंड ऑल. कोई कोर्डियली नहीं होता, वो मिलते भी नहीं. अच्छा ठीक है. सो टीचर नहीं पढ़ेगा, लेकिन लिखना बड़ा जरूरी है. नाउ रे डायग्राम का मार्क्स हुआ, कंटेंट का. अगला पॉइंट, अब हम किसकी हेल्प लेंगे? ज्योमेट्री की. हम एक ट्रायंगल लेंगे 1, एक लेंगे ट्रायंगल 2. नाउ दिस इज एंगल आई आर, दिस इज एंगल आर, ऑल्टरनेट एंगल. दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई, ऑल्टरनेट एंगल. देन दिस इज बी, ऐसे सी, AC, though two triangles, you take triangle 1 and triangle 2. Time short, मैं लिख नहीं रहा, since you are all teachers already, you know this. AC is common. Angle I is equal to angle R. Laws of reflection. है ना? Then the triangles are congruent. Triangles are, because this is 90H. Then triangles are congruent means OC is equal to CI. How is it? You'll get 5 marks. मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमने चलना है. यहां मार्क खा जाते हैं हम लोग. क्या बेटा, सर कितना सिंपल क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया. क्या सर, आपने बताया था ना, जितना हम आप पीछे खड़े होती हैं आगे इमेज बनती है. हाँ, तो तूने क्या लिखा? सर मैंने लिख दिया 5 + 5 दैट्स 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. वेरी गुड बेटा, तेरे को 5 मार्क्स कोई दे देगा? नहीं देगा. ये डिफरेंस है जो एनआई में ही हम बता सकते हैं, एआई में नहीं बता सकते. ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है टीचर का. यू कैन नॉट रिप्लेस द नेचुरल टीचिंग, कम वट में कम. हाउ इज इट? was it learning one? So there are so many things. अगर वक्त जो है मेरे पास, तो मैं तो आई एम ऑल योर्स. मैं पंजाबी च कहने, मैं तो घरों कढ़िया होया. इट्स अप टू यू. If you want, I can give more demonstrations and all. If it's over and out, then I request 1-2 more example. मैम को अच्छा लगा. सर 1 मिनट इसको रब करेंगे. One example, Honorable Muhammad sir has given us the center of mass. Am I right, sir? If you join me, ना मेरे को एनर्जी मिल जाएगी थोड़ी सी. Anybody who is in 11th and 12th sitting here? Lot of people. ठीक है. See, 1 upon f is equal to mu minus 1, 1 upon r1 plus minus 1 upon r2. What is that? Lens maker formula. सुना होगा आपने? Yes. In the lens maker formula, there are 2 types of refractions we study. Before that, from rarer to denser, then denser to Rare. दोनों को जोड़ दो, लेंस मेकर फार्मूला बन जाता है ना सर? Now if this question is of 3 marks,
तो आपने सिंपली दो इक्वेशंस लिखनी है, क्या 1/f म्यू -1 1/r प्लस 1/r2, देन अंदर से उल्टा करना है और चेंज कर देना है 1/f2। तो ऐड ऑन करेंगे, तो अगर ये 3 मार्क्स का तो दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन कर देंगे, अगर ये फुल 5 मार्क्स का तो दोनों डिराइव करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट you have to tell to the students, and need not to write the current starts from the battery, then goes to array, starts from object, goes to mirror, and after that reflected, then it is reflected, reflected and reflected. Since we are not interested in that reflector, then it is coming back joining virtual image. No marks. वही वाली बात, laws, Newton's laws, in laws, out laws. So dear teachers, plan your reply proportional to the marks. This is an arcana. Arcana is a knowledge having few people, right? वो टीचर के पास ही होता है। अब जैसे सेंटर ऑफ मास की बात करने की, तो बेंगल देखिए आपने, बेंगल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। तो मैंने एक टीचर से पूछ लिया डेमोन्स्ट्रेशंस में, मैं कहा बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिंग कहाँ है? कहता सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज एट द सेंटर। डू यू सी एनी मास देयर? मास है नहीं, तो हाउ इट इज? इट्स गुड क्वेश्चन। Basically, center of mass is that point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Wherever the center of mass is going, the body is going. So, at the center there is no mass, but it is supposed to be concentrated. So, there are so many points, moment of masses, Bernoulli's principle, long derivation, short derivations. You have to make your notes according to the length of the marks distribution. That makes the difference between an experienced teacher and non-experienced teacher. So, hope there are plenty of things we can discuss. I request ma'am and everyone, vice principal ma'am, sir, sorry, and please let us, if you want to say something, I request you all. चलो, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। Thank you, sir. And now I would like to invite Honorable Principal of Language Schools. सर इसको थोड़ा रोटेट कर देना, इधर कर दीजिए। Thank you. Very good evening to all of you. First of all, I would like to thank Mr. Vipin for sparing his valuable time and enlightening us with these concepts of physics, and more than the concept of physics, of how to teach in the class, how to make science interesting, how to relate it to daily life. Because like what we learned here, rote learning is not what is to be done. सीखना जरूरी है, जो हम सीखते हैं उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो आज के वर्कशॉप में हमने यही सीखा कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ में कनेक्ट बना के रखें। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक विल स्टॉप राइटिंग द फीडबैक फॉर 2 minutes. It is important to connect with the students. The entire workshop we learned this, that if you are spending some time in knowing your child and connecting with the child, then half the battle is won. बाकी का बुक का कंटेंट, बाकी का आपका टीचिंग, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस अगर आपका वो कनेक्शन बन गया है। सो कनेक्ट बनाना है एंड बच्चों को सिखाना है। And of course, Cardova, I would like to thank you for the wonderful books that you have. And these books are actually, we know the system.
There are lots of books जिनके through the teachers go through the books and then this book is selected because it has very good content and we keep updating. We keep updating as per the requirement of the students, as per the guidelines given by CBSE, as per the guidelines given by the government, which we have to follow. And this is a wonderful content, and you all have a lot of potential to teach, and you all are doing wonderful job as per sir also. Unke accordingly, this big round of applause for all of you, because unke accordingly ऐसा ऑडियंस उन्होंने कहीं नहीं देखा है. So we are very proud of each one of you. So just two takeaways: connect with your students, that's very important. Physics और साइंस एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल है. So उसको आसान बनाइए और बच्चों को सिखाइए, क्योंकि हर चीज़ में फिजिक्स है. Everything has physics is related to your daily life. And thank you so much, Vipin sir, कि आपने इसको इतना interactive, and this is we also learned a new term of organic workshop. So this is an organic workshop. There was no PPT was used and it was tailor made. जो चीज़ें आप लोग क्लास में कर रहे हैं, आप ही के क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों ने डिस्कशन के थ्रू we all learned from each other's experiences. It was a wonderful, rare learning experience for each one of us. So once again, thank you so much. Can you speak from 1 minute? Can I? Okay, yeah, please. Dear teachers, basically when we talk about the subject and all, I'm confined to 11th and 12th, 10th, 9th too. The reason is that the extension of the 9th class science, say physics and chemistry, is in 11th class, and the 10th is they are in plus 2. When we talk about a particular topic, we have to discuss. It is not a simple task, because a lot of teachers are not from the same class. They will not have any interest in that. What the hell it is going on, Bernoulli's theorem, cyclotron and all. So whenever you want in specialized pure subject test, let the students be there. 11th and 12th, 9th, 10th also. The teachers be there, Vipin sir is there. Then you will find what physics is. How I am doing a general session with you. I am not focusing on a particular topic here. Do you agree? Do you agree? I think you disagree. Your voice is not having that amplitude. So dear teachers, it is a general session. Cn is 2n plus 2, sir. Then put n is equal to 1. Cn is 2n. मालूम है सर, एल्केन ग्रुप एंड आर ग्रुप, CN2n plus 1. तो ये मैंने एक जनरलाइज आपसे डिस्कशंस किया. ये मेरे को इसलिए बोलना है क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं. अगर आप इसको वर्कशॉप कहते हो तो मैं इसको वर्कशॉप बोल देता हूं. अगर आप इसको मोटिवेशन बोलते हैं मैं इसको मोटिवेशन बोल देता हूं. कुछ भी तैयारी करके नहीं आते हम लोग, यहीं से तैयार होता है. द क्रेडिट गोज टू यू. हाउ इज इट? मैं कुछ नहीं मैंने किया, सभी लोगों ने आके कंट्रीब्यूट किया, हमने उसके सॉल्यूशंस ढूंढे हैं. दिल से करिए वही जो आपको अच्छा लगता है भाई. ओके, सो स्टैच्यूटरी वार्निंग, डू नॉट चेंज योर सेल्फ, फॉलो योर वेज इफ यू लाइक इट. एक भी टीचर यहां बदल गया तो मैं ऑस्कर अवार्ड जीत गया. पहले तो अपने अंदर का टीचर तो ढूंढ लो, हमें ढूंढना उसी को है. मुझे पूछ रहे थे आप खुद ड्राइव करते हो? मैंने कहा यस. हम 3 लोग हैं, विपिनजीत सिंह खालसा ड्राइवर, विपिन भारद्वाज माय असिस्टेंट एंड विपिन शर्मा रिसोर्स पर्सन. ये तीनों लोग अंदर ही हैं इसमें 3 in 1. तो मैं तो अपना बैग भी खुद उठाता हूँ, मुझे नहीं एम्बैरेसिंग लगता क्यों उठाए कोई. तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता रहता हूँ कि क्या किया जाए. जैसे मैंने बोला ना कि सभी एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सफेरिकल, हार्ड, रैंडम. तो हम टीचर्स भी एक जैसे हैं. हमारी बहुत इच्छाएं हैं, हम मार के आते हैं, हम अपने दुखों को भूल के आते हैं. वर्कशॉप बहुत लंबी हो जाए, अंदर से परेशानी में भी बैठते हैं. ठीक है, तो बहुत कुछ हमें करना होता है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, द क्लासरूम मस्ट गो ऑन. रिमेंबर राज कपूर, ही लॉस्ट हिज मदर. वो बोलता कि मेरी माँ मर गई है, मैंने जाना है. रिंग मास्टर बोलता है कि नहीं राजू, गो एंड मेक द पीपल लाफ.
बोलता सर मेरी माँ की डेथ हो गया तो फिर कल से आना नहीं है। हमारे पाँव में दर्द हो, हमें तकलीफ़ हो, हम बहुत कुछ छोड़ के आते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माता हैं। तो सरकार को चाहिए एक टीचर को स्पेशल स्टेटस दे। प्राउड टू राइट ऑन योर कार TR, DR डॉक्टर, ER इंजीनियर, व्हाई नॉट TR। सो बिग सैल्यूट टू यू और टीचिंग फ्रेटर्निटी। ये अवार्ड अवॉर्ड कुछ नहीं मायने रखते, अगर मैंने अच्छा किया है तो मैं डिजर्व करता हूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे ही है। सो लव यू ऑल। अगर कुछ इंटरेक्शन में गलती हो तो आई विल नॉट अपोलोजाइज। ओके, थैंक यू। यस मैम। Thank you, ma'am. Thank you, sir, for your inspiring and motivational words. On behalf of SDTS team, it's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. My heart fills with lots of gratitude and respect for our distinguished resource person, respected Shri Vipin Chandani, थैंक यू। for not only sparing his invaluable time for us to grace the occasion, but also for enlightening us with their commendable talk on the subject. This workshop was truly worthy. Sir, you really motivated us to gain more and more knowledge and hard work in our respective fields. I would also like to thank our Honorable Director Ma'am and Honorable Principal Ma'am for motivating us all, and all the staff members present here and gracing the occasion. Thank you all. Now, I would like to invite Honorable Director Ma'am, Vice Principal Sir, Geeta Ma'am in charge Middle, Shashikant Sir in charge 9th and 10th, for the token of appreciation for our today's resource person. सर ये सेंटर में कर लेना इसको। Thank you, sir, for guiding us all and motivating Made us by for our our students. future. This is an organic gift made by students. And thank you, sir, for organic workshop. So from today onwards in India and in Uttar Pradesh, Teaching will be भारत के प्रधानमंत्री की जो सीट है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, और ऑर्गेनिक वर्कशॉप का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को ही जाता है। they तो will now start organic teaching. love it मैम। एंड आई प्रॉमिस यू माय प्रेजेंस व्हेनेवर यू कॉल मी, जिस भी गेयर में हूँगा मैं बैक या फ्रंट में आ जाऊँगा, और बच्चों के लिए सेशंस जब मर्जी आप बुलाइए। थैंक यू कोरोडोवा and the honorable Korodova director, who is really a mentor and a big advisor too. तो basically ये साढ़े हिमाचली पर आए हैं, तो I had been to entire Himachal. Big round of applause for Himachal Pradesh. It's a wonderful state. People are very nice there. Of course Punjabis too. Thank you. Yes ma'am. एक ग्रुप फोटो My pleasure and honor जी, my pleasure. कम टीचर